astronomy, space. Okay. Yes, that's. I wanted to cover that part of their portion. Actually, I was expecting a few of them to be here. This is going to be really weird if they don't show up. चैप्टर है एक्चुअली ना आरआईएमसी मुझसे कहा गया था कि थोड़ा सा आरआईएमसी के बच्चे होते हैं ना आरआईएमसी एग्जाम्स जो देते हैं ना वो बच्चों के लिए आई वाज टोल्ड कि उनको थोड़ा सा ये करा देते हैं यू नो लेट्स हैव अ थिंग विद देम लाइक उनको थोड़ा सा लाइक यू नो उनको पढ़ाते हैं उनका चैप्टर कराते हैं आरआईएमसी वाले नहीं है अरे यार ठीक है ओनली 11th का लेक्चर है अरे मुझसे आई वाज टोल्ड कि दे विल जॉइन द 5 o'clock लेक्चर व्हिच इज व्हाई आई हैव ओपनड अप दिस होल थिंग नाउ हाँ ठीक है तो फिर हम अपना ही लेक्चर करें क्या हाय मैं तो पढ़कर भी नहीं आई आपके लिए सॉरी मतलब आई डिड नॉट यू नो आज नहीं आज हम स्पेस नहीं पढ़ने वाले थे आई हैड प्लान्ड फॉर नेचुरल रीजन्स ना तो उसकी पिक्चर्स नहीं है मेरे पास normally I always keep pictures available so that I can show you I anticipate आप क्या पूछेंगे and then so on so forth ऐसे तो that's why then it doesn't take me enough time give me another minute आज कुछ अलग ले लूँ मैं यही पढ़ा दूँ क्या मैं आपको यूनिवर्स पढ़ा दूँ no yeah I can't see any kids from RIMC here today अरे नहीं don't worry मैं यूनिवर्स नहीं unusual landforms or something अरे यार normally when I teach you guys all that stuff ना तो मैं उसको I research it very well and then come to you ऐसे मैं online कुछ तो देख लेती हूँ and then जाके ये करती हूँ ऐसा नहीं करती यार I don't do that I usually look that up very well उसके लिए prepare करना पड़ता है हम ना अपना पोर्शन कर लेते हैं आज तूफानी हो जाए चैट हर किसी का बना दूँ मैं अच्छा यू हैव अ पब्लिक चैट मैं अपना अपना कर लेती हूँ बस हो गया I can't see any kids if some younger kids show up ना तो please let me know हाँ तो हम ऐसा देखते हैं this is what we were doing ना हाँ correct आप लोग क्या म्यूट हो गए हो क्या हाँ सॉरी आप लोग को अनम्यूट ऐसे पूरा म्यूट करा दिया है ओह सॉरी नहीं यार आप लोग बात कीजिए मेरे लेक्चर में बड़े बच्चे बात कर सकते हैं अच्छा Hello नहीं ma'am, how are you? Good I'm evening. good why not to unmute you people have been making this क्या ऐसे आप बहुत बातें करते हैं क्या अरे नहीं वो some people come ना random so they disturb the whole lecture. Or it's a default setting by the academy. अच्छा नहीं I would rather that you people stayed this is not a rule or something ना No, then no. It all depends on teacher. Waiting room enable करो आप. okay wait a second ना ठीक है क्या ओह अरे आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ कोई बात नहीं अच्छा गलत हुआ था बहुत ओके चलो यार कोई नहीं we'll do this climatic regions okay see people climatic regions जो होते हैं ना उसका मतलब होता you understand what a climate is right what is your idea of a climate people what is your idea of a climate long term weather conditions weather conditions which stay for a longer period of time very true okay that will be called as a climate and this ये जो होता है sorry weather क्या होता है how do you define as weather
Thank you, thank you. This is a nice definition. Climate जो होता है ना, it's a long-term average of weather. Okay, typically averaged over a period of 30 years. See, people normally what you call as weather is simply weather. You know, the conditions around the temperature, pressure, these conditions around you. Okay, those will be called as weather conditions. Then what is climate? Climate is, yes, weather is a short-term geographical conditions. Like weather can be the weather could have been sunny in the morning and a little snippy in the evening, right? Snippy as in thoda sa cold in the evening. It is quite possible, especially in Indian winters. It's quite possible. So let's the thing about weather and climate, the difference between weather and climate is that I'm not happy with waiting room or people. Okay, the thing about weather and climate is that weather jo hota hai, that's a very temporary condition. Okay, it's a temporary condition. Climate is the same conditions averaged over a certain period of time. Okay, at least 30 years, 25 to 30 years. Correct. Weather is a daily atmospheric condition, and climate is something that remains permanent. Climate is a permanent atmospheric condition. Okay, for example, let's say India has a tropical climate. Okay, India जो होता है, that has a tropical, नहीं नहीं, I won't remove the waiting room, don't you worry about that part. Okay, so India has a tropical climate. Okay, when I say India has a tropical climate, it simply means that India will have all these conditions. What conditions do you associate with a tropical climate normally? What kind of conditions do you normally associate with a tropical climate? People, you can talk if you want. It doesn't have to be a this essay. High temperatures, low pressure Very true. area, Absolutely. Rains होंगे, high temperatures होंगे. heavy rains Um, when the monsoons evergreen. come in. Yes, usually tropical season में tropical climates में आपको monsoons भी दिखते हैं. High hotness, okay? In generally tropical climates will Then be hot. longer days and shorter nights. Longer days and shorter nights. Only if it is, if the sun is in your wala tropic. If the Ah, sun is in the opposite wala tropic, then you will have shorter uh, days and longer days. nights. Yes. Right, right. Okay. Winter negligible होता है. Uh, The mean difference in a day's temperature is very less. Diurnal temperature range. Thank you. Diurnal temperature. Thank you. See, I really enjoy teaching you guys. Diurnal temperature range जो होता है वो भी कम होता है. Okay. Usually आपके पास इतना you understand what a diurnal temperature range is. I'm looking to annotate and completely forgetting about it. We just mentioned diurnal temperature range. Okay. What's a diurnal temperature range, people? Diurnal temperature range is difference between the maximum and minimum temperature of a day's time. Absolutely correct. Within 24 hours, the difference between the maximum and minimum temperatures would be defined as the diurnal temperature range. Okay, तो ये जो temperature range होता है, ये आपको tropics में usually थोड़ा सा कम मिल जाता है. Equator पे तो बहुत ही negligible होता है, लेकिन tropics में आपको थोड़ा सा कम मिल जाता है. Okay. On the other hand, अगर कंसिडर करते कोई और क्लाइमेट ये देखते हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, नहीं वो नहीं कंसिडर कर सकते, वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इट्स नॉट स्टिल वेरी हैप्पी फॉर अस. Temperate climate. Temperate. टेम्परेट क्लाइमेट्स, लेट्स कंसिडर विद टेम्परेट क्लाइमेट. ओके, ब्रिटेन के साथ या फिर ऐसे किसी नॉर्थ अमेरिका में जो थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन है ना, नॉट एग्जैक्टली टू द कोस्ट बट अ लिटिल इनसाइड द कोस्ट. ओके, तो And you can वैसे even take वाले के साथ example of Cochin and Haryana or Chandigarh area. एक्चुअली ना मुझे हरियाणा एंड चंडीगढ़ ना उसका कॉन्टिनेंटलिटी का बहुत आता है ना, इसलिए मुझे उसको टेम्परेट के लिए नहीं कंसिडर करना था. I wanted something which is not exactly on the coast, but which does not really suffer from continentality. I had thought of it, and then I bunked that theory. Okay, so abhi we are considering bigger on the global scale. Let's consider something like New York. New York को consider नहीं, London को consider करते. Okay, despite that 5 days of sunshine, हम London को ही consider करते. आपने Harry Potter movies देखे हैं, right?
Yes. पीपल। हाँ जी, आपको लंदन का ये याद है क्लाइमेट कैसा था? वो याद है? हमेशा ऐसा ग्लूमी ग्लूमी। द रीजन बाय द होल Foggy थिंग रहता है, misty and foggy. ग्रेश, हाँ जी, ग्रेश एंड डार्क इज नॉट जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू शो कि हैरी पॉटर में यू नो डार्क फोर्सेस यहाँ वहाँ घूम रहे थे। द रियल प्रॉब्लम विद लंदन इज ऑल्सो दैट इट्स अ लिटिल यू नो इट रियली हैज 5 days ऑफ सनशाइन। उनके पास बहुत सनशाइन नहीं होता है। दे इट्स यूजुअली ऑलवेज क्लाउडी एंड यू नो ऐसे रेनिंग एंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। इसीलिए वो लोग हमेशा छाते लेके घूमते फिरते रहते हैं। ओके, अभी द थिंग विद ब्रिटेन इज ना, अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट कि वो वहाँ पे कभी भी बारिश होती रहती है, द थिंग इज दैट इट ऑल्सो एंजॉयज अ टेम्परेट क्लाइमेट। ओके, टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब होता है नाउ यू आर वे अबव, दिस इज द इक्वेटर। ओके, ये जो बीच में है वो इक्वेटर है, ये रहे आपके ट्रॉपिक्स। ओके, मैं ट्रॉपिक्स को ऐसा शेड कर रही हूँ, दिस इज हाउ आई एम शेडिंग द ट्रॉपिक्स। तो उल्टा करना चाहिए था ना मैंने इन ट्रॉपिक्स को शेड। रुको, नहीं नहीं ठीक है. you think I'm already going to take enough time to shade these, no? Okay, so ये रहे आपके ट्रॉपिक्स। ओके, अब उसके बियॉन्ड जो रीजन लाई करता है ना, दिस वन, ओके, दिस रीजन, दिस इज कॉल्ड एज द टेम्परेट रीजन। ओके, इसको टेम्परेट रीजन कहते हैं। अब यहाँ पर आप सन के इन्फ्लुएंस से काफी दूर चले आए हैं। ओके, ट्रॉपिक्स में आपका जो सन है वो हमेशा ओवरहेड होता है। विद इन द ट्रॉपिक्स द सन इज overhead at least twice in a year. Okay, when you go beyond the tropics, okay, the sun is never overhead. Beyond the tropics the sun will never be overhead, which means कि आपको sun का hello Pushkar, sorry people, this class is for 11th standard. Were you asked to come to this class for RIMC studies? Pushkar, you can unmute yourself and speak for the moment. Yes, you were asked to do that. How many of you are here? Can you see any other friends of yours? My voice is not there. I'm sorry. What, बच्चा? कहाँ गया वो बच्चा? I'm all are 11th standard students mostly. You people can hear me, right? Acha, that kid is gone. Ma'am, all are almost 11th standard students. Yeah, but actually I was told to teach those kids. You मुझसे, हाँ ये देखिए ये बच्चा है यहाँ पे, पुष्कर नहीं गए। अरे ये ऐसे पर कैसे कोई है वो, ही नहीं. अरे he's appearing within the blink of an eye and then going back again. इंटरनेट मैं अभी, का. हाँ सॉरी मैं क्या ले रही हूँ, मैं ना आई एम ट्राइंग टू टीच यू द नेक्स्ट चैप्टर, climatic reasons, but we might very well switch into other things ऐसे। Oh, this is absolutely new information, Kaustubh. Can you please put this into public chat? इस क्लाइमेटिक रीजंस में बिग बैंग थ्योरी नहीं है, मैं कुछ और पढ़ाने की कोशिश कर रही थी अर्लियर। थैंक यू, आई हैड नो आइडिया कि रेन फॉरेस्ट में हमारे पास इतने जवाब है ऑन्कोलॉजी के लिए, आई मीन कैंसर के लिए। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली न्यू इन्फॉर्मेशन टू मी, आई हैड नेवर रेड अबाउट दिस बिफोर। एनीवेज पीपल, where were we? I was telling you that temperate climates जो होते हैं, they will obviously, please remember कि the reason why that climate is different from what we normally experience in the tropics is because it is away from the sun. Okay, since it's away from the sun, it will receive the rays of the sun in a slanting manner. Normally, see, how do we receive the rays of the sun? Suppose this is the person, okay, this is we, and how do we receive the rays of the sun? Overhead. Okay, we receive the overhead sun. Whereas on the other hand, a person in a temperate climate will receive slanting rays of the sun. Okay, never overhead rays. That entire region, this entire temperate region will always receive the rays of the sun in a slanting fashion. Okay, so that is why most of their that is why the seasons and everything else changes so much. The climate, the temperature, the pressure, the way the winds blow, everything changes. Okay, once वो एक बार आप sun के influence change हो गया, तो everything else changes. Is this understood, people? Sorry. Can somebody read this now? Then I'll
be able No, to we get can a see that resolution. RMC stuff. You can see the RMC stuff. You don't want to do natural regions. Acha, I thought you were doing natural regions. हाँ मैं क्लाइमेटिक रीजन्स नेचुरल रीजन्स ही करने की कोशिश कर रही थी वो आरएमसी के बच्चे हैं नहीं तो मैं कैसे उनको पढ़ाऊँ No, ma'am, भाग I'm गए ना saying that we can see the share screen which are for the notes which are written for RMC students. oh is the I'm sorry I had forgotten sorry oh that's why okay यार today is just not my day sorry anyways अभी दिख रहा है आपको ये वाला हाँ is this visible okay Yes, कौन पढ़ेगा ma'am, I will read. yes please thank you And this page number. the page number this whatever is visible to you you want to read from your own textbook हाँ, ma'am. क्या बात है then this is रुकिए यार हटो क्या ये 44 पेज नंबर I 44 got it. अच्छा Ma'am, from geographical explanation, right? no read the brain power thing also Acha, the blue box. yeah the blue box Have you ever thought why there is difference in skin color of various peoples in the world? Why all the people in the world do not eat same food? Why there is a variety in clothing pattern and types too? Even our houses are different. How come flora and fauna are restricted to particular region? Why different fruits are found in different places? Should I continue or you want to? yes please do so this is the answer to your questions whatever we are going to read ahead is the answer to all these questions As you know, there are five spheres, namely atmosphere, lithosphere, hydrosphere, biosphere, and magnetosphere. You have studied about them in earlier classes. Out of these, atmosphere is one which is actually related with climate and weather. The climate of any region is decided by detailed study and observation for a longer period of time, such as 30 years. These observations give us an idea about the trends in the weather and its elements. Multiple occurrences in any phenomena of weather with consistency helps us to decide the climate of the region. The climate of a place is responsible for variety in so many factors, including our food, occupation, our houses, our clothes, and many activities too. Okay, good, cool. Thank you, Akash. First of now, एक तो see the reason why we are why the flora and fauna is different, why people dress differently. Sometimes people also react according to the climate that they come from. This is one theory that we need to discuss. People adapt Whether to different types of climate. That's why absolutely it people is adapt to different. different types of climates and that is the reason why they become a certain kind of people also okay so these different these differences in humanity are because of also in some way related to the climates okay so there are five spheres atmosphere lithosphere what's atmosphere the blanket of gases that surrounds us okay what is lithosphere the earth okay ये जो rock होता है ना surface of the rock earth है that will be called as the lithosphere okay hydrosphere is all the water around us All water that is bodies. correct the water bodies around us biosphere is the living factors inside it okay human beings and other living animals and plants and stuff like that okay and Now, magnetosphere biosphere is also like all the above three mentioned spheres mixed together. uh, but only the living part the living factors in atmosphere lithosphere and hydrosphere. Yes. Correct. The living factors in atmosphere, very good, Akash. The living factors in atmosphere, lithosphere, and hydrosphere will be considered as biosphere. Okay, and then there is magnetosphere. What's magnetosphere? People. Ma'am, the magnetic effect produced by Earth's core. The influence of it actually the influence of it okay
So out of these, the atmosphere is the one which is actually related with climate and weather. Okay, when you say climate and weather, what you're actually saying is the various conditions that make the weather and the climate up. Okay, so what are these conditions? Temperature, pressure, altitude, latitude, ये सब Humidity. determine करते हैं ना? So correct. So these will be the conditions that we are talking about. The climate of any region is decided by the detailed study and observation for a period longer of time, for a longer period of time such as 30 years. Okay, तो कम से कम 30 years तक अगर आप एक certain जगह का weather रोज का monitor करो, तो आपको पता चले कि यार चलो ठीक है, over this huge period of time a certain place has always managed to remain something like this. Okay, so that is why मतलब हमेशा ही, see suppose हमेशा ही in the months of November and December this grows really cold, this place grows really cold. Then in the months of June to September, it starts raining like there is no end to it. And then again, it becomes extremely hot from the months of March to May. Okay, so what would you call this? You would call this a proper Indian climate, right? So this kind of a thing is, for this weather to become monitored and tabulated over a period of time and then to be converted into a permanent condition is called as, rather to be accepted as a permanent condition, would be called as a climate. Okay, and please remember, we are studying climate in a time when we all know that there is something called as climate change. Okay, it exists around us. So let's understand what climate is first, and then in the next chapter I think you are dealing with climate change. So these observations now, they give us an idea about the trends in the weather and its elements. Okay, so there are multiple occurrences of various phenomena of weather, and they occur with consistency. For example, I have I'll tell you this, people. See, it could be like I said, in the morning the weather was a bit sunny. Okay, now as and how it is turning, it is we are moving towards sunset. The weather becomes a little snippy. I can feel a little coolness in the air, and by the time it becomes dark, it's going to become proper cold at night. Okay, because whose voice is unclear? My voice unclear, people? Can't you hear me? And we can hear you clearly. Ma'am, your voice is proper. Yes, ma'am. Okay. um यार, you आपको अगर मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी ना, इट इज प्रोबेबली बिकॉज योर कनेक्शन इज अ लिटिल हेजी, ऐसे थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा आपके, इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी। हाँ जी। Okay, so the climate of a place is responsible for the variety in so many factors, including our food, our occupations, our houses, our clothes, many activities, so on and so forth. Okay, see, for example, if I live in Pune, my major occupation cannot be fishing. Why? Because there are no major fishing areas around me. Okay, There is but no coast around. correct. If my major occupation is, I mean, my major occupation could have been, in the earlier days, if the climate around me was going to decide my occupation, then it would have been more like farming or something like that. Okay. But on the other hand, if there is a sea coast or if there is a river around me, a huge river, then fishing is a normal idea. Okay, you can deal with that. Have you seen Canada? Have कनाडा, या कनाडा इज अ गुड प्लेस टू थिंक ऑफ। कनाडा में आपने देखा है बड़े बड़े टेम्परेट फॉरेस्ट है उनके। ओके, एंड वहाँ का जो सॉफ्टवुड होता है ना, दैट इज एक्सट्रीमली फेमस, मतलब वो पेपर पल्प इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस होता है। तो उनके यहाँ लंबरिंग करके एक ऑपरेशन होता, ऑक्यूपेशन होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट लंबरिंग इज? LUMBERING, लंबरिंग, या राइट। सो लंबरिंग करके जो ऑक्यूपेशन होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन होता है। लोग रोज सुबह सुबह अपना अपना वो पावर सॉ लेकर चले जाते हैं, एंड देन दे यूज इट टू कट डाउन ट्रीज, एंड देन दे कम होम। उनको एक ऐसे गाड़ी इकट्ठा करके लेके जाती है, एंड गाड़ी इकट्ठा करके वापस लेके आती है घर पे। वुड कटिंग, एग्जैक्टली, वुड कटिंग। वुड कटिंग जो होता है ना, उसको लंबरिंग कहते हैं, राइट? बिकॉज वहां पर उस इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड एज लंबर। तो लंबरिंग कहते हैं उसको, कि वुड कटिंग को। सो इट्स, वंस अगेन, कैन यू ट्राई दिस ऑक्यूपेशन ओवर हियर? नो। ओके, ऑल राइट, आई लिव ऑन द डेक्कन प्लेटो। कैन आई ट्राई कि चलो यार, मेरा राइस बनाने का बड़ा मन कर रहा है, घर में नहीं है, मतलब ऐसे एग्रीकल्चर वाइज राइस या फिर जूट वगैरह बनाने का बड़ा मन कर रहा है। कैन आई डू दैट? नो, नॉट ओनली विल द सॉइल नॉट सपोर्ट इट, द रेन्स विल ऑल्सो नॉट सपोर्ट इट। ओके, सो हर रीजन का अपना अपना वो जो क्लाइमेट होता है ना, उसका अपना अपना एक ये होता है, व्हाट डू यू से,
कैरेक्टरिस्टिक होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लाइमेट आर, राइस कर सकते हैं लेकिन जूट नहीं होगा, राइस भी इतना अमेजिंग नहीं आएगा आपको. सी द थिंग इज नॉट वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, द थिंग इज कि विल आई हैव द ऑप्टिमम कंडीशंस टू grow the rice? I will not. I require low-lying plains. I am already living on a plateau. So what I require is low-lying plains and those paddy fields, enough water supply also. So this is, यहाँ का soil black soil है. The reason why it is black soil is because it requires less water. See, once again, ये climate के ऊपर depend करता है. Have you seen India में, okay, especially in the lower peninsular part, आपने बहुत बड़े वुल के फैक्ट्रीज देखे हैं? बड़े बड़े वुल के फैक्ट्रीज लगाकर बैठ गए हम लोग, एंड हमने बड़ा सारा वुलन क्लोथ्स सेल किया है. नहीं, आपको वुलन क्लोथ्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं? लुधियाना, ऊपर की तरफ, कश्मीर की तरफ से थोड़ा सा आता है, लेकिन लुधियाना, या राइट, नॉर्थ में, नॉर्दर्न रीजन में आपको, राजस्थान में भी मिलते हैं, करेक्ट. तो दैट रीजन यूजुअली सप्लाइज द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया अब बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स. इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है ना, वो छोड़ दिया ना आपने, एक बार वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस कर लिया, एंड यू गो बियॉन्ड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, तब जाके आपको एक्चुअल सर्दी मिलती है. सर्दी एज एन ऐसे विंटर्स मिलते हैं, हार्श Real विंटर्स. cold. Right, right. The region becomes cold, the temperatures are lower in winters, and that is why you will require woolen clothes. Hence the industry of woolen clothes over here. Okay, and यहाँ पर normally आपको, tell me this place, यहाँ पर एक सूरत है. Okay, you have Surat over here, Bombay over here, and Madras over here. What are all these places extremely famous for? Cotton textiles. Okay, because that is Cotton mill. exactly what people over here will wear. आपका जो क्लाइमेट होता है वो हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है, खाना पीना, रहन सहन, आपका इकोनॉमिक लाइफस्टाइल, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस. ओके, सो एंड ओरिजिनली जो आपका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस होते हैं, अक्सर आपके आगे के ऑक्यूपेशंस भी उसी पे डिपेंड करते हैं. सी पीपल, ओरिजिनली बॉम्बे डेवलप्ड एज अ मेजर इंडस्ट्री. ओके, it started with the cotton mills and everything, and then Cotton mill. right, everybody came in one way or another. Okay, and then somehow it expanded itself to other industries as well. Then later on it also expanded itself to, and then because it was traditionally developed as an industry, we could also develop it in other ways. Then Bombay ke sath sath Pune also developed because we were closer. So Pune also, and anyways education was great over here, so Pune also developed like that. So traditionally these places had some kind of history in business, which is why they later on went on to be such huge business centers. Okay, so climate बहुत कुछ influence करता है. Is this okay people? समझा आपको ये? Let me take your attendance first. I'm sorry, this is not really going to my this today. Give me one moment. अब my question is कि मैं आपको मंडे का टेस्ट काहे पे लूं? Testy मतलब. I wish we could do that, but भैया will ask me, रिंकू टेस्ट कहाँ गई? तो मुझे तो उनको जवाब उसका देना जितना पड़ेगा. पार्ट होगा उतना उसका ही टेस्ट ले लो ना. हाँ, ये लॉजिकल जवाब है चैप्टर बच्चा. जितना मंडे तक होगा. मैं एक्चुअली ना आपका सिर्फ सैटरडे फ्राइडे तक का ही पोर्शन कवर करती हूँ, जितना फ्राइडे तक हो गया है, सो दैट आपको सैटरडे का भी, इफ यू मिस इट ना, देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. You can see any kids who are not from your class, क्या रे? I can't. I see these people, Abhay, Hina, Swapnil. Why are you people not connecting your audios, Ray? How can you hear me if you do not connect your audio? They can't even hear you. Exactly. तो फिर क्या फायदा लेक्चर सुनने का? क्योंकि मैं तो ऐसे, I mean, if I was सुनने का miming or नहीं, something. ma'am, they come for attendance. अवेंजर्स पे टेस्ट लिया था आपका? सॉरी, क्या? वो अटेंडेंस के लिए आते हैं. अच्छा, ठीक है, गुड फॉर देम. सॉरी, आपका Sherjit sir. अवेंजर्स पे टेस्ट लिया था? किसने लिया था आपका अटेंडेंस अवेंजर्स पे टेस्ट? Sherjit sir. Him I can वो expect to do लास्ट that. पे मतलब वो
अब नॉर्मल लास्ट टेस्ट के अपन लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ऐसे एवेंजर्स पे लिए थे, मतलब स्टार्टिंग में। हाँ क्या? एसटीआई बैच में थे ना हम लोग मैम, तभी ऐसे टेस्ट दे देते और लास्ट के 2 to 3 क्वेश्चन जैसे ही कोई भी फिक्शियस कैरेक्टर पे ऐसे ही सवाल पूछते थे। मतलब सीरियसली वो तुमको पूछ रहे थे कि थानोस की बेटी का नाम क्या है, ऐसा? हाँ हाँ अरे हाँ, सेम बाप पूछा रे। था, सेम पूछा था। थानोस के बेटे का नाम क्या है? बेटी का पता बेटी है। का नाम बेटी मैम, बेटी। हाँ हाँ। बेटी का नाम। ओके 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 ठीक है। ए हाउ कूल। नहीं नहीं, मैं सबको मेरा cool ऐसा मिलेगा कोई I don't think I can do that. It's okay. मेरा ऐसा कोई ये नहीं है. I don't have the talent to do that. Sorry. चलो हम ना हम ये करेंगे. एक्टिविटीज देखेंगे. मैं ना आपको एक हाँ मैं गूगल फॉर्म्स पे ऑफिशियली टेस्ट लेती हूँ. मेरे को टेस्ट लेना होगा तो मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लूंगी. क्या? अच्छा नहीं, ये हम नहीं थे. मैं आपको बता रही हूँ, मैं अवेंजर्स पे नहीं. आई लव अवेंजर्स, लेकिन मेरा टेस्ट अगर होगा तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे होगा. टेस्ट तो नहीं ना. नहीं 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 नहीं. हॉबिट पे भी नहीं. अच्छा अच्छा. नहीं, मिर्जापुर तो मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी नहीं देखा है, तो लाइक आई हैव नेवर सीन एन एपिसोड, सो दैट कैन लॉर्ड नॉट ऑफ द हैपन. रिंग्स पे सब फेल हो जाएंगे। Anyways, my tests are not known to be very easy, are they? So it will be quite in sync with whatever we've been doing so far. Anyways, ये देखिए, मैं ना आपको बता रही थी कि there is a saying, okay, since we are talking about man and nature, there is a saying which says कि man is a product of its nature, okay. यस हाँ, इसका मतलब क्या होता है? Man is a product of his nature. हाँ, very correct. His nature मतलब doesn't mean his nature, normal nature. Nature as in nature, उसके आसपास जो nature है उसके ऊपर, okay. So उसका मतलब ये होता है कि आपने वाइकिंग्स का नाम सुना है? वो इनका जो थ्योरी है, you know these people who came down from Scandinavia, they were called as Vikings, okay. तो they were a तीन warrior वाले tribe. हाँ करेक्ट, they were a warrior tribe. एंड वो इतनी टफ कंडीशंस में रहते थे ना, मतलब अभी स्कैंडिनेविया के कंडीशंस आप उस जमाने में इमेजिन कर सकते हैं. they were extremely cold conditions, and it is not like चलो यार सिर्फ ये तीन वाले महीने हमको थोड़ा सा सर्दी में रहना है, बाकी तो थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाएगा क्लाइमेट. ऐसा सब नहीं होता था. they used to always remain in very cold and brutal and harsh conditions. तो because of that उनका जो nature था ना, that also became very kind of brutal and harsh. So they were a warrior tribe, extremely, and they were very very resilient. Because of their resilient nature, they were also very resilient, okay, as a tribe also. So even people who come down from that region, even if you observe the tribals who come down from that region, they will also be somewhat of that, okay. See now, earlier now man used to be in less, how do you say, man के numbers कम थे, human beings के numbers कम थे, and nature was way vast for human beings to control, okay. But now what has happened is, earlier we could have easily said that man is a product of his nature. I mean, जैसा इंसान का climate होगा उस तरह से इंसान होगा. इंडियंस को देखा है क्या? देर इज ऑलवेज अ चलता है एटीट्यूड. पूरे एशिया में देर इज अ चलता है एटीट्यूड, ओके. एंड इन जनरल काम करने का ना जो तरीका होता है वो बहुत ऐसे, जुगाड़ू होता है। हाँ जुगाड़ू होता है. इट इज नॉट लाइक अ प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि नहीं बैठ गए हैं ठीक से काम किया है. दैट इज बिकॉज आसपास की कंडीशंस ही इतने वियर्ड होते हैं कि आपको इस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इतनी बार एक्चुअली पीपल एक्चुअली बीमार होते हैं, okay. This kind of climate also makes people ill a lot, okay, because of the presence of bacteria and viruses and stuff like that. Hot tropical climates will support the growth of viruses and bacteria and all that, right. तो ये जो सब कुछ होता है ना, उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज दैट लोगों का जो प्रोडक्टिविटी होता है वो अपने आप कम हो जाता है. तो पीपल इन द एशियन रीजन्स, वो जो एशियन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन्स है, वहाँ के लोग इतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए. वेराज टेम्परेट रीजन्स के जो कंडीशंस है वो थोड़े से कूल है, अच्छे है. दिस इज ऑल्सो ग्रेट. व्हाट डू यू कॉल
the climate is also great. So obviously लोगों का productivity ज़्यादा होता है, लोग बीमार कम होते हैं, and that is also one reason why वहाँ का economic growth जो है वो थोड़ा सा better रहा. Okay, the economic growth was a little better in those regions. What are you people talking about Valhalla and all that? यार you people are really funny हाँ. मैं क्या बता रही हूँ Viking आपको? language. अच्छा, अरे वो उनका वो स्पेशल प्लेस है. Okay, ठीक है. Have you gotten this, people? But now what has happened is human beings have just populated this planet, okay? Overpopulated this planet. And because of that, they can now, in one way, influence nature, okay? And that is why it has become such a huge problem, because now they have gone ahead and Now created we such a can say mess the of same things. ulta. I beg your pardon? We can say that saying reverse in today's scenario, that nature is a Correct. product of the Absolutely. Now nature has become a product of the man, okay? Because now whatever human beings are doing affects nature so badly, so much so that I remember मैंने आप लोगों से ही कहा था just a few um, like जून जुलाई के महीने में I told you I was tracking cyclones. मैं हर cyclone को track करती थी जो दौता अमेरिका की तरफ जाता था, because I told you my family stays there. So related. उसकी वजह से and I had never noticed कि एक महीने में 10 या 11 cyclones हो गए थे वहाँ पे, and this has never been the case. Okay, that area does have a few cyclones every now and then, but 10 to 12 cyclones in a month, and some of them were recurring. Okay, so this kind of thing doesn't happen. अभी हमारे यहाँ देखिए अभी 2 दिन पहले तक बारिश हो रही थी. Okay, it just rained out of nowhere. It started raining in the middle of last week, है ना? हम तो पुणे में हाँ पुणे में लास्ट फ्राइडे बारिश हो रही थी शाम को. सो दिस काइंड ऑफ थिंग ना, इट इज ऑल्सो बिकॉज टेम्परेचर आई मीन क्लाइमेट चेंज हो रहा है. दैट इज वाई आप जो सीजन्स होते हैं ना उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे. लाइक एक सीजन का जो सर्दी के सीजन में सर्दी होनी चाहिए, गर्मी के सीजन में गर्मी होनी चाहिए. सो ये जो सब कुछ होता है ना, दैट becomes a little difficult. That is what we are talking about when we say कि climate change हो रहा है. Okay, this is the thing. निर्वाणा नहीं, निवर्ना क्या रहता है? अरे यार कौन सा नया साइक्लोन आ रहा है इंडिया मैम में? नया साइक्लोन आने नेवर अच्छा वाला है। नेवर निवर नेवर निवर नाम का कोई साइक्लोन आ रहा है. ओके तमिलनाडु एरिया से आ रहा है, तमिलनाडु एरिया से कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु तेलंगाना ऊपर आ रहा है ऑफ कोर्स. ओए वो ईस्ट कोस्ट पे जा रहा है. अरे 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 अरे. यस मैम. ओके ठीक है. मुझको एक निसर्ग ने बड़ा परेशान कर दिया था. सो आई एम ओके विद नॉट डूइंग दिस. पीपल हैव कौन यू सा नाम अंडरस्टूड? निसर्ग ना हाँ निसर्ग यार, वो जब आया था तो इट वाज अ स्कैरी थिंग. कुछ नहीं आया था. आपको कुछ नहीं हुआ था? मेरे यहाँ के हाँ सारे मतलब विंडो हाँ हमारे इधर भी हुआ था पर इतना नहीं हुआ था जितना सोचा था. okay, I'm not very fond of living in a house where the window panes rattle a lot and I feel like the house is हमारे